Here I'm going to start a new series of tests for chapter wise. पहले हम चैप्टर वाइज टेस्ट लेंगे जिसमें टोटल मार्क्स होंगे 30 और आपके पास टाइम होगा 60 मिनट्स का टू कंप्लीट दिस टेस्ट. And definitely subject is computer science 10 metric. This is by the way chapter number टेस्ट सीरीज जो मैंने अभी यहाँ पर बनाई है ये 30 मार्क्स का टेस्ट है और 30 मार्क्स के डिवीजन कुछ ऐसे है कि 4 मार्क्स के एमसीक्यूज देन 18 मार्क्स के आपके पास शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जिसमें मैंने कोई ऑप्शन कोई चॉइस आपको नहीं दी है एंड देन एक लॉन्ग क्वेश्चन है जिसमें भी आपको कोई ऑप्शन नहीं है. वट एवर द क्वेश्चंस लॉन्ग एंड शॉर्ट इज देयर यू हैव टू अटेम्प्ट ऑल दोज क्वेश्चंस, राइट? सो दिस इज चैप्टर नंबर 1 एंड आपके पास जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है उसमें भी कुछ ऐसा ही नोट होता है like 4 possible answers A, B, C and D to each questions are given. The choice which you think is correct, fill that bubble in front of that question with marker और पेन. यानी कि जो भी कुछ ऑप्शन आपको लगता है कि ये करेक्ट है सिर्फ उसके बबल को फिल करना है विद मार्कर और पेन. कटिंग ओवर राइटिंग नहीं करनी है आपने. अपने जो बबल्स हैं उनसे बाहर नहीं जाना चाहिए. आप बबल को रॉन्ग फिल नहीं कर सकते. अगर आप ऐसा करेंगे so you will be awarded 0 marks, right? Cutting, overwriting, filling 2 or more bubbles, ऐसा कुछ भी करते हैं आप तो आपको 0 marks मिलेंगे. Attempt as many question as given in that objective type question, मतलब यहाँ पर कोई आपके पास ऑप्शन चॉइस नहीं होती है. जितने भी क्वेश्चंस होंगे you have to attempt all those question, okay? And if you haven't filled any bubble by mistake आपने किसी और क्वेश्चन के आगे 2 बबल्स फिल कर लें तो पहली बात है वो क्वेश्चंस भी रॉन्ग होगा आपका जिसमें आपने 2 बबल्स फिल किए. दूसरा जो अनअटेम्प्टेड या अनफिल्ड बबल्स होंगे उनके भी आपको कुछ मार्क्स नहीं दिए जाएंगे, राइट? सो दीज आर 4 MCQs. Let's try to solve these. A collection of all the necessary tools for a programming makeups a programming that. वो कौन से ऐसे टूल्स होते हैं, वो कौन सी क्या चीज ऐसी होती है जहां पर आपके तमाम टूल्स होते हैं जो कि आपको हेल्प करते हैं प्रोग्रामिंग करने में. क्या वो इन्वायरमेंट होता है, कोई प्लेस होती है, कोई एरिया है और सर्कल है. सो वी हैव स्टडीड दैट अ कलेक्शन ऑफ ऑल द नेसेसरी टूल फॉर प्रोग्रामिंग मेकअप अ प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट, राइट? Then we discussed that there are 2 types of comments, single line comments and double line comments, right? And if you remember, we have discussed as well that there are double line, multi-line comments always end with star and backslash. It start with like this and it ends with like this. These are comments, okay? So the point B is correct in second option. An IDE has that user interface. IDE क्या होता है पहले तो ये जानना बहुत जरूरी है. IDE इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट. और ये जो इन्वायरमेंट होता है वो उसका इंटरफेस कैसा होता है? इट्स GUI, CLI, सिंपल और नन. सो आप इस क्वेश्चन का आंसर तभी कर सकते हैं इफ यू हैव रेड द चैप्टर नंबर 1 केयरफुली. उसमें मेंशन है कि GUI क्या होता है, CLI क्या होता है. GUI बेसिकली ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, CLI मींस कमांड लाइन इंटरप्रेटर, राइट? सो जो IDE होता है उसमें इट्स टोटली बेस्ड ऑन GUI. व्हाई? बिकॉज उसमें ग्राफिक्स होते हैं जिनके थ्रू हम करते हैं. कोई कमांड लाइन नहीं होता, हम कोई कमांड्स नहीं देते. वी जस्ट यूज डिफरेंट ग्राफिक्स एंड देन क्लिक करके तो हम उसको सॉल्व करते हैं. द फोर्थ इज वेरिएबल नेम कैन नॉट बिगन विद अ digit, underscore, alphabets or all. So we have studied that variable name cannot begin with digit, right? Variable name must start with alphabet or underscore. वेरिएबल का नेम लिमिटेशंस में हमने पढ़ा था कि वेरिएबल का नेम जो है उसमें अंडरस्कोर भी हो सकते हैं, अल्फाबेट्स भी हो सकते हैं, बट उसका नेम स्टार्ट डिजिट से कभी भी नहीं हो सकता. सो पॉइंट ए इज करेक्ट, राइट? लेट मी जस्ट mark these so it will be easy for you to know the answers, right? नेक्स्ट हमारे पास सब्जेक्टिव क्वेश्चन है जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 उसमें हमारे पास कुछ 9 short questions I have planned and you have to do all the questions. Definitely मैं little bit I'll try to explain.
Define programming languages. So programming languages क्या होती हैं? In short, which helps the programmers to do programs, right? Discuss the main parts of the program structure. वो कौन से main parts होते हैं program structure के? So if you remember, header होता है and the main function होता है, right? Why and where we need to include header files? Definitely in the header part, right? But you are not going to just give the one-liner answer. I'm just giving you the questions. Please write down the answers, consult from the book, and then write down the answer. Prepare the answers. List down any 5 reserved words in C language. तो reserved words वो वाले words होते हैं which have a special meaning in C language. जैसे कि int है, int is a data type. It has a special meaning in C language. आप ये नहीं कह सकते कि int को as a data type use कर सो data variable name use कर लो. No. Main is a function, void is a keyword. So all the reserved words are keywords as well, right? So reserved words के different 5 types उन्होंने मांगी है, तो int, float, char. If you just write down the data type's name, it's also a reserved words. Difference between constant and variable. It's pretty simple. Constant values cannot be changed. Variables value will be changed over the time, and we can do changings anytime. Floating point or float, right? So floating point numbers कौन से होते हैं and float क्या है? So it's a data type. It's include all the decimal numbers. Floating points numbers like 1.789, 7.86. इसकी memory में space होती है 4 bytes. What is the purpose of comments and their syntax, right? So comments क्या होते हैं? Comments are additional information which can be added in our program, right? और प्रोग्राम में कैसे एडिशनल इंफॉर्मेशन हम ऐड कर सकते हैं? थ्रू कमेंट्स, राइट? तो कमेंट्स के देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कमेंट्स, सिंगल लाइन कमेंट्स एंड मल्टी लाइन कमेंट्स. Their syntax is given in the book. Please consult. How we can declare and initialize a variable? Write down syntax. So declaration is where we are just declaring the variable with its data type, like int x, int y, float, w. These are declaring a variable. Initializing a variable where we are giving some value. So we can do initialization at the time of declaration and later on as well, right? तो declaration और initialization में difference clear है. Syntax आप book से देख लीजिए. Write down any 2 naming rules for variables. सबसे पहला rule तो most important, that you cannot use reserved words as a variable name. रिजर्व वर्ड्स को वेरिएबल के नेम पे यूज नहीं कर सकते. दूसरा, आप ये भी लिख सकते हैं कि इट विल ऑलवेज बिगन विद अल्फाबेट और अंडरस्कोर्स. वी कैन नॉट स्टार्ट विद द वेरिएबल नेम विद डिजिट्स. सो देयर आर अदर क्वेश्चंस एज वेल, बट दीज आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस. एंड उसके अलावा बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिनकी मैं दिस इज जस्ट 30 मार्क्स क्वेश्चन, तो एक मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगी जिसमें आई विल बी सिलेक्टिंग ऑल द चैप्टर 1 क्वेश्चंस, जिसमें जितने भी शॉर्ट क्वेश्चंस आपको प्रिपेयर करने चाहिए उनके बारे में इंफॉर्मेशन होगी. सो नेक्स्ट पार्ट इज लॉन्ग क्वेश्चंस. यहाँ पर देयर इज ओनली 1 क्वेश्चन इज गिवन. व्हाट इज प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट? Explain IDE, Integrated Development Environment. What is the role of text editor and compiler of IDE? So I hope you know that what is programming environment. So programming environment is the place where programmers use to write some codes, right? It's a collection of all the necessary tools for programming make up a programming environment. जैसे अभी यहाँ पर भी इसकी definition given है, right? First, you will define the definition of programming environment. Then you will be defining explain IDE, right? Explain का कहा गया है. So first आप उसकी definition लिखोगे IDE की. IDE क्या होता है? Basically एक software होता है जो provide करता है programming environment, right? Which facilitates the programmers to writing and executing programs is known as IDE. राइट. देन आप एक्सप्लेन करोगे कि हाउ इट्स गोना बी हेल्पफुल फॉर यू. यहाँ पर सब टूल्स होते हैं, इंटरलिंक्ड होते हैं. यू कैन यूज कंपाइलर, डिबगर, ईच एंड एवरीथिंग. वो सारे फीचर्स आप यहाँ पर एक्सप्लेन करोगे. यू कैन एक्सप्लेन इट इन नंबर्स, बुलेट पॉइंट्स, इट्स अप टू यू. एटलीस्ट राइट डाउन 5 points, okay? Because
8 marks का क्वेश्चन है ना, तो 2 marks for this and at least 5 marks for this. 1 mark for definition and 4 marks for the points. Okay. And what is the role of text editor and compiler for IDE? See, when you are explaining IDE, you have to mention the most important point, the text editor and compiler in IDE, right? So text editor is also a software that allows programmer to write and edit computer programs. ये programmers को allow करता है write करने में and edit करने में computer programs को. All IDE have their own specific editors, right? हर IDE का एक अपना editor होता है which will be interlinked in that specific IDE. Then you will be explaining compiler, and compiler is a software that is responsible for conversion of your source program into प्रोग्रामेबल लैंग्वेज, यानी जो भी आपने जिस भी लैंग्वेज में जावा में कोड किया है, C++ में कोड किया है, इन एनी लैंग्वेज यू हैव डिफाइन द कोड और आपने उनके कोड किया है, कंपाइलर इज एक्चुअली हेल्पिंग यू टू कन्वर्ट दैट कोड इनटू machine language code or in machine language code which will be easy to understandable for the machine. Right? So while answering the question of the long question, please keep this thing in your mind that you have to explain all the points they have mentioned in that question. Right? जैसे programming environment, IDE, text editor and compiler. अगर आपने इनमें से किसी एक point को भी miss किया तो definitely they are going to deduct your marks. So that's it for today. In the next video, I'll be talking about chapter number 2.